Okay, students. So in the part one video of our chapter 8 natural resources, we have studied about three different topics, that is uses of the resource, types of the resource, and introduction, that is the meaning of the resources. Okay, so let's move further. We'll move towards the another topic of our chapter, that is the planning and conservation of the resources. Planning and conservation of the resources. See, first of all, you should know the meaning of the conservation first. Okay, then after we will move further. कंजर्वेशन क्या है? सिर्फ कंजर्वेशन का मतलब होता है बचाना. तो कोई भी चीज को हम कब बचाएंगे? जब वो डेंजर में हो तब. ओके, सो बेसिकली कंजर्वेशन मीन्स द अरेंजमेंट डन to keep something out of the danger. Okay, are you getting what I am saying? Conservation means what? Conservation means it's a one kind of arrangement for what? Arrangement to keep something out of the danger. Here that something is resources. Okay, so here if you want to define conservation, it means to keep out the resources out of the danger. When something is in danger, when something is scare का मतलब कम क्वांटिटी में होना. ओके, सो अगर कोई चीज कम है, कोई चीज डेंजर में है, तब अगर हमको उसको बाहर निकालना है उससे. ओके, इफ वी वांट टू कीप समथिंग आउट ऑफ डेंजर, दैट अरेंजमेंट टू कीप समथिंग आउट ऑफ डेंजर इज नोन एज द कंजर्वेशन. सिंपल मीनिंग है बचाना, ये तो आपको सब पता ही होगा, बट यहाँ पर इसका मीनिंग ऐसा होता है. ओके, कंजर्वेशन मीन्स इट्स एन अरेंजमेंट टू गेट समथिंग आउट ऑफ डेंजर. हियर दैट समथिंग और एनीथिंग मीन्स द रिसोर्सेस. ओके, सी यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है. कंजर्वेशन मीन्स व्हाट डज कंजर्वेशन मीन्स? Conservation means it's an arrangement to get anything out of the danger. यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ here anything means resources. Okay, so meaning clear हो गया conservation का. So let us move. See, now the question arises, why there is a need to conserve the resources? Okay, ये conservation करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो सी conservation जो word है वो directly related है scarcity से. ओके, कंजर्वेशन वर्ड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्केर्सिटी. ये अंडरलाइन कर लेना आप. द वर्ड कंजर्वेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्केर्सिटी ऑफ द रिसोर्सेज. यानी कि कोई भी चीज जब स्केर्स हो, कम क्वांटिटी में हो, तभी उसको कंजर्व करने की जरूरत आती है. ओके, इफ दैट थिंग इज अवेलेबल इन प्लेंटी, ओके, इन अबाउंडेंस, then there is no need of conserving that thing. Okay, I think it must be clear now. So why there is a need of conservation of resources? तो उसका पहला आंसर ये है, because that particular thing is scarce, because the resources is scarce. Okay, it is not available in plenty of quantity, it is not available in abundance, and so there is a need for its conservation. Now one more important, ये तो एक पहला point हो गया. Okay, why the resources must be conserved? Because it is scarce, so it must be conserved. Second point, तो resources limited है, इसलिए उनको कंजर्व करना पड़ता है. ओके, ये तो मैंने बोल दिया फर्स्ट पॉइंट में कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, रिसोर्सेज स्केर्स है, इसलिए उनको कंजर्व करना पड़ता है. नाउ सेकंड पॉइंट, human wants are unlimited while resources to fulfill them are limited. Human needs or human wants are unlimited. ये अंडरलाइन कर लेना. Okay, human wants are unlimited while resources to fulfill them are limited. ये इकोनॉमिक्स में बहुत बढ़िया सेइंग है, human wants are unlimited. It means कि अगर मेरे पास अगर मेरे पास एक बाइक है, ओके, तो आई विल डिमांड, मेरे पास एक मतलब बाइक हो तो मुझे ज्यादा डिमांड होगी कि मतलब कार आ जाए मेरे पास. ओके, देन सपोज इफ विद गॉड ग्रेस I get a car, then I will demand for a huge villa, a bungalow, okay, a better house. Even if I get the better house, तो वहां पर मेरी नीड सेटिस्फाई नहीं होगी. मुझे और ज्यादा चाहिए, मुझे और ज्यादा पैसे चाहिए. ओके, खुद का प्राइवेट जेट, अगर खुद का प्राइवेट जेट भी आ गया तब भी वहां पर मेरी नीड रुकेगी नहीं. इवन दी एशियाज रिचेस्ट पर्सन मुकेश अंबानी, ओके, मुकेश अंबानी ऐसा तो नहीं कि वो सबसे मतलब एशिया में पैसे वाला है तो उसके कोई नीड अभी फुल्ली वो सेटिस्फाई हो गया, नहीं. इवन ही वांट्स मोर मनी. ओके, वो भी चाहता है कि मेरे नेटवर्थ में और ज्यादा पैसे ऐड हो.
ओके ये एक नीड से दूसरी नीड अराइज होती रहती है. ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड. पहले ऐसा नहीं था. इन अर्लियर पीरियड ऑफ टाइम मतलब आपको पता ही है, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, रोटी कपड़ा मकान, ये तीन चीजें ही थी बेसिक. बट नाउ ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड दिस वांट्स कैन नॉट बी फुलफिल्ड by ourselves, so we have to depend on the other resources for fulfilling them. हमें अपनी नीड को पूरा करने के लिए दूसरे रिसोर्सेज पे डिपेंड होना पड़ता है. ओके so second thing is that human wants are unlimited and resources are limited. Okay, so we have to conserve the resources. See यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है why there is a need to conserve the resources because they are limited. ये मैंने फर्स्ट पॉइंट में समझाया. ओके सेकंड पॉइंट human wants are unlimited. ये फर्स्ट और सेकंड दोनों कनेक्टेड ही है. human wants are unlimited while resources are limited. So in short resources limited है इसलिए उनको कंजर्व करना चाहिए. That is the first point. Now second point, because of the advancement in the science and technology its use have been increased. ओके पहले 100 साल पहले आप गिन लो. ओके बिफोर 100 years ago अभी जितने रिसोर्सेज यूज होते हैं उतने तब नहीं यूज होते थे बिफोर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स एगो. ओके अभी बहुत ज्यादा यूज होते हैं. व्हाई? बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी. नाउ रिसोर्सेज, द यूज ऑफ द रिसोर्सेज हैव बीन इंक्रीज्ड, सो इट्स यूज हैव बीन इंक्रीज्ड, so there is a scarcity and that's why we have to conserve the resources. And third thing, in the present age the resources are exploited haphazardly. haphazardly उसका मतलब ऐसा होता है कि without any restriction, जैसा मन पड़े वैसा यूज करना. okay you can, if you want to, you can note it down. haphazardly अपने हिसाब से यूज करो, जैसा मन पड़े वैसा, in a haphazard manner. Okay. In the current age we are using the resources in a haphazard manner. exploited का मतलब यहाँ पर use ऐसा आप समझ लो. ऐसा नहीं है कि हम ऐसा यूज कर रहे हैं सस्टेनेबल यूज. Okay, it will sustain for the near future, it will sustain for our future generation. No, it's not like that. We are using it as a haphazard, in an haphazard manner. तो उसका मतलब ये है कि अभी बहुत ज्यादा यूज हो रहा है. अगर प्रेजेंट जो स्पीड से अगर रिसोर्सेज यूज होंगे तो इट विल नॉट बी अवेलेबल इन द नियर फ्यूचर. Okay, so these are the probable points. You can note it down why there is a need to conserve the resources, because they are limited, because of the advancement in the science and technology, because at the current age they are exploited in a haphazard manner. Okay, see यहाँ पर यही दिया गया. if the resources are exploited at current rate, they are exploited haphazardly and irrationally, then it will be a dream to maintain the development and the current lifestyle. जैसा अभी हम current lifestyle enjoy कर रहे हैं, future generation ऐसी lifestyle enjoy नहीं कर पाएगी. Why? Because we are using the resources and at some point these resources will get exhausted. Okay, समझ में आ रही है बात? Okay, let's move further. See, now ये तो समझ में आ गया कि कंजर्वेशन का मीनिंग क्या है. इट्स एन अरेंजमेंट टू गेट एनीथिंग आउट ऑफ डेंजर. व्हाई देयर इज अ नीड टू कंजर्व द रिसोर्सेज, ये भी समझ में आ गया. ओके नाउ वी विल स्टडी अबाउट द व्हाट डज कंजर्वेशन इंक्लूड्स. ये कंजर्वेशन में आता क्या है. चलो ये तो समझ में आ गया, कंजर्वेशन का मतलब बचाना है. ओके तो यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज में हम क्या क्या कर सकते हैं. What different things are included in the conservation of the resources? तो यहाँ पर है कि रैशनल यूसेज करो. रैशनल यूसेज का मतलब क्या है, तो कि अकॉर्डिंग टू द नेसेसिटी, जितनी जरूरत है उतना ही रिसोर्सेस को यूज करो, अननेसेसरी यूज ना करो रिसोर्सेस को. देन कंजर्वेशन, अभी कंजर्वेशन में कंजर्वेशन तो आएगा ही. ओके एंड रीयूसेज ऑफ द थिंग्स. रीयूसेज ऑफ द थिंग्स मींस, इट मींस कि अगर एक बार खत्म हो गया तो वापस उसको रिसाइकल करके रीयूज करो. Okay, so these three different things are included in the conservation of the resources. That is rational usage, conservation and reusage of the things. See, it includes the things like rational usage, its conservation and reusage. ये underline कर लेना. It includes the things like rational usage, its conservation and reusage. ओके एंड उसके बाद लास्ट में ये मीनिंग समझा है मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है कि कंजर्वेशन का मीनिंग क्या है. यहाँ पर लास्ट में दिया गया, व्हेन देयर इज अ डेंजर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑन द लाइफ ऑफ ए ट्री. यहाँ पर आप ट्री का मतलब नेचुरल रिसोर्सेस समझना. ओके व्हेन देयर इज अ डेंजर ऑफ एग्जिस्टेंस ऑन द लाइफ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस और ह्यूमन लाइफ, the arrangement made for it is called the conservation. ये भी अंडरलाइन कर लेना. The arrangement made
sorry, when there is a danger on the existence of the life or a tree, then the arrangement made for it is known as the conservation. Okay, so I think इतना clear हो जाना चाहिए आपको. Okay, now we will study about the different points which are included in the planning and conservation of the resources. ये point बहुत ही simple है. Okay, a very simple points which are included in the planning and conservation of the resources. तो पहले point में क्या दिया गया है? See, first of all you have to collect the information of the resources around your nearby area in a particular region, okay, where you are living. ये प्रैक्टिकली तो देखो तो वैसे पॉसिबल है या नहीं भी है, लेकिन ये पॉइंट है तो वी विल डिस्कस इट. यू हैव टू you have to first of all collect the information of the resources which are available in the nearby area. वो रिन्यूएबल रिसोर्स कितने हैं, उसमें से नॉन रिन्यूएबल कितने हैं, यूटिलाइज कितने हुए, अनयूटिलाइज कितने हैं, वो इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी होगी. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज, अवेलेबिलिटी ऑफ यूटिलाइज, अनयूटिलाइज एंड प्रोबेबल रिसोर्सेज ऑफ एनी रीजन और कंट्री. एक बार आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, आपको पता चल गया ओके कि इतने रिसोर्सेज है, उसमें से इतने नॉन रिन्यूएबल है, इतने रिन्यूएबल है. तो अब आपको क्या करना है? सेकेंड पॉइंट, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उनको साइंटिफिकली यूज करो. साइंटिफिकली यूज यहाँ पर ऐसा मतलब है कि जितनी जरूरत पड़े उतना यूज करो. ओके, इरेशनल यूज मत करो, रैशनल यूज करो अकॉर्डिंग टू द नेसेसिटी. ये सेकंड पॉइंट है. सी, द रिसोर्सेज व्हिच आर लिमिटेड और नॉन रिन्यूएबल शुड बी एक्सप्लॉइटेड साइंटिफिकली एंड शुड बी यूज्ड ओनली व्हेन इट इज नेसेसरी टू यूज देम. तो ये सेकंड पॉइंट है. पहला पॉइंट एक बार आइडेंटिफाई कर लो कौन कौन से रिसोर्सेज है. ओके, उसमें से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कितने हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज कितने हैं. ओके, वंस यू आइडेंटिफाइड द रिसोर्सेज, देन आफ्टर you have to use the resources which are renewable. रिन्यूएबल रिसोर्स है उनको ज्यादा यूज करो. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, नॉन रिन्यूएबल और लिमिटेड रिसोर्स है उनको कम यूज करो. ओके, नॉन रिन्यूएबल एंड लिमिटेड रिसोर्स उनका यूज कम करो. यहाँ पर now third point, attempt should be made to develop those resources which the quantity of can be increased. यहाँ पर इसका सिंपल मीनिंग ये होता है कि रिन्यूएबल रिसोर्स का ज्यादा यूज करो. रिन्यूएबल रिसोर्स ऐसे रिसोर्स है जिनकी क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हो. Once it get exhausted, again it will be regenerated, its quantity can be increased. Okay, so ऐसे रिसोर्सेस का उपयोग थोड़ा कम करो जिनकी आप क्वांटिटी बढ़ा नहीं सकते. इसका सीधा सीधा मीनिंग होता है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का यूज कम करो, रिन्यूएबल रिसोर्स का यूज ज्यादा करो. ओके, now third thing, fourth point, the resources which are cheaper and are easily available should not be wasted, but they should be used sparingly in the near future. अभी sparingly का मीनिंग क्या है? sparingly का मीनिंग है according to the necessity. जितनी जरूरत है उतने ही रिसोर्सेस को यूज करो. ओके, ऐसा नहीं है कि कोई रिसोर्स चीपर है. अभी इसका एग्जांपल आपको देना हो तो example of the cheaper resources, water. Water is a cheaper resource only, no? Water is a cheaper resource. तो ऐसा नहीं है कि water का उपयोग मतलब अभी आप इसका यूज ऐसे करो in an unwanted, unrestricted manner, ऐसा नहीं चलेगा. You have to use the water sparingly, otherwise पीने लायक तो आपको पता ही only 1% drinkable water is there in the earth. Okay, so the resources which are cheaper should not be wasted, but instead of that they should be used sparingly for the future use. Okay, तो इतने points clear हो गए. Once again बोल देता हूँ पूरे. See, first point, तो उसमें क्या, तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो कितने रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल है, यूटिलाइज कितने हैं, अनयूटिलाइज कितने हैं. उसके बाद तो जितने भी रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है उनका यूज कम करो. ओके, देन आफ्टर अटेम्प्ट शुड बी मेड टू यूज रिन्यूएबल रिसोर्स मोर एंड मोर. रिन्यूएबल रिसोर्स है उनका यूज ज्यादा करो. देन आफ्टर दोज रिसोर्स whose rate is cheaper should not be unnecessary wasted. इतना मतलब ऐसा कोई रिसोर्स है जिनका रेट चीपर है तो उनको वेस्ट नहीं करना चाहिए. एंड मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, दोज रिसोर्सेज व्हिच आर अवेलेबल इन द लिमिटेड क्वांटिटी शुड बी कंजर्व्ड. फाइंडिंग इट्स अल्टरनेटिव ऑप्शन थ्रू द टेक्निकल डेवलपमेंट इज फेवरेबल इन द लॉन्ग टर्म. अल्टरनेटिव ऑप्शन, ये पॉइंट ये पर्टिकुलर वर्ड अंडरलाइन कर लेना. अल्टरनेटिव ऑप्शन फाइंड आउट करना चाहिए. अभी इसका एग्जांपल तो देखो, सोलर एनर्जी इंस्टेड ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी. Okay, then CNG instead of petrol,
So we have to find the alternative option of the resources, so that the resources which are available in the limited quantity can be sustained for a longer period of time. ओके, अल्टरनेटिव ऑप्शन हमको फाइंड आउट करना है ताकि वो रिसोर्सेज ज्यादा समय के लिए चल सके। एंड ये 2 पॉइंट्स लास्ट के हैं। ओके, ये मैंने 9th स्टैंडर्ड में ही बोला था, ये फ्री पॉइंट्स है। रेमेडीज अगर आपको पूछे एग्जाम में तो ये 2 पॉइंट्स आप किसी भी रेमेडीज में ऐड कर सकते हो, किसी भी रेमेडीज में। ओके, स्ट्रिक्ट लॉ शुड बी फॉर्म्ड एंड पब्लिक अवेयरनेस शुड बी मेड, ये मैंने 9th स्टैंडर्ड में भी बोला था। स्ट्रिक्ट लॉ शुड बी फ्रेम्ड एंड public awareness should be made. Okay, see, necessary laws should be formed for the conservation of the resources and it should be enforced strictly. Necessary laws should be made for the conservation of the resources and then after citizens should be acquainted का मतलब होता है familiar होना। Okay, citizens should acquainted with all the facts associated with the rational usage of the resources and a public awareness must be कल्टिवेटेड। ये तो फ्री पॉइंट है, सब में आप ऐड कर सकते हो। ओके, एंड वन मोर थिंग, ये एग्जाम में जो ये है पॉइंट्स, ओके, इट कैन बी आस्क्ड इन अ ट्विस्टेड मैनर आल्सो। सी, इन एग्जाम लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द प्लानिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स इन डिटेल। यहाँ पर तो ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन इन एग्जाम इट कैन बी आस्क्ड स्टेप्स टू प्रिजर्व द मिनरल्स, ओके, रेमेडी टू प्रिजर्व द मिनरल्स। ये सभी एग्जाम में ये लोग पूछ सकते हैं, तो आप नोट डाउन कर लेना सर। ओके, so let us move toward the next topic, that is soil formation. Soil formation, okay, see, first of all we have to understand the meaning of the soil। यहाँ पर 5 definitions मैंने लिखी हुई है meaning of the soil की। okay, these 5 definitions you have to understand and they are very simple definitions and almost same, one and same only। So let us start with the definition of the soil and then after we will study about how soil is formed। See, these are very basics, you have studied it in the earlier standards, the process of soil formation, okay, and meaning of the soil also। So let us start। See, part of the soil of the earth where vegetation grows is known as soil। ये बहुत ही simple definition है। The upper layer of the crust of the earth where vegetation grows is known as soil। Soil is a part of the lithosphere, you all know that। 4 main spheres होते हैं, that is the lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere, the last one which is a combination of all the above 3 spheres। So soil is a part of the lithosphere। by the way, ये मैंने जो अभी लाइन बोली है ना, उसके लिए मैं देवेंद्र सर की फीस में से 10% काट लूंगा, ये सभी ये साइंस का पार्ट है। ओके, चलो कोई बात नहीं। मीनिंग ऑफ द सोइल, सी, part of the resources part of the surface of the earth wherein the vegetation grows is known as the soil। सोइल क्या है? तो सोइल अपर लेयर है अर्थ के क्रस्ट की। अर्थ के क्रस्ट के ऊपर एक लेयर है जहां पर वेजिटेशन ग्रो होती है और जहां पर हम लोग रहते हैं ऑन द लिथोस्फीयर, अ पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ वेयर वेजिटेशन ग्रोज एंड ह्यूमन लिव्स is known as the soil। Second definition क्या कहती है? See, it is a thin layer composed of the various elements on the surface of the earth। Same definition, it's a thin layer, it composed of the various elements। ये various elements में क्या आएगा? Biotic as well as the abiotic elements। Mainly biotic elements का ज्यादा important role होता है soil की formation में। Okay, various different kinds of the elements are there in the surface of the earth and that layer which contains all these elements is known as the soil। okay, इतना clear हो गया? A thin layer on the surface of the earth containing various elements is known as the soil। Then next, third point, the soil is a natural mixture of minerals and biotic elements which have a capacity to grow and develop the vegetation। Again, same meaning, the soil is a natural mixture of minerals and biotic elements। okay, soil is nothing but a layer consisting of the minerals and biotic elements which has a capacity to grow and develop vegetation। ओके, सोइल क्या है? तो क्या एक लेयर है, लेयर के अंदर सारे मिनरल्स है, मिनरल्स के अंदर बायोटिक एलिमेंट्स है। ओके, ये सभी एक मिक्सचर बना हुआ है और ये उस मिक्सचर की जो लेयर है उसको सोइल कहते हैं, जहां पर हम लोग रहते हैं, जहां पर वेजिटेशन ग्रो होता है। okay, then next, uppermost layer of the crust of the earth again where the growth and development of vegetation is possible is known as the
soil. And the last one, the soil is the layer or the surface of the matter formed due to the mixture of the scattered material or the parental rocks and vegetation. पेरेंटल रॉक्स, ये यहाँ पर नया एक टर्म है पेरेंटल रॉक्स, मतलब ऑलरेडी आपने स्टडी तो किया, यहाँ पर है नया। पेरेंटल रॉक्स का क्या मतलब है, इतने बड़े रॉक्स, ओके, उसमें से कोई और चीजें फॉर्म होती है, तो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं उसमें से कोई और छोटे रॉक्स हो या फिर पाउडरी फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद वो लेयर के रूप में आ जाता है, तो उसको मतलब कोई और चीजें फॉर्म होती है उसमें से, तो उसको पेरेंटल रॉक बोलते हैं। ओके, द बिग रॉक्स आउट ऑफ विच समथिंग एल्स इज फॉर्म्ड। ओके, तो सोइल का जनरल मीनिंग क्या है? अभी सर ये पांच डेफिनेशन आपने दे दी, तो ये क्या पांचों की पांचों डेफिनेशन पढ़े? सिर्फ ये मीनिंग तो सेम ही है। अगर आपको लिखना है, कोई एक डेफिनेशन याद रखनी है, तो ऐसा याद रखो कि सोइल इज अपर लेयर ऑफ द अर्थ which contains the minerals and other biotic elements in which the vegetation grows. Simple. Okay, हमें वापस नहीं बोलूंगा, रिवाइंड करके देख लेना। Okay, so I think the meaning of the soil must be clear to you now. So we'll move further with the soil formation process. So we'll just read the paragraph. Generally the part of the surface of the earth wherein the vegetation grows is known as the soil. ये underline कर लेना, the part of the surface of the earth where vegetation grows is known as soil. Okay, then a thin layer composed of the various elements on the surface of the earth, humidity, humus and air are mixed up beneath. The mantle rocks lie below the soil. The soil is formed due to the material available through denudation. ये important है, soil is formed due to the material available because of the denudation. ये आगे मैं पढ़ाऊंगा अभी soil formation की प्रोसेस में denudation का क्या मतलब होता है। Okay, if you want you can note it down now. Denudation means the breaking of the big parental rocks into the small minute particles. Okay, it's a process by which a huge rocks break down into the powdery form into the small minute particles. It is known as the denudation. ये denudation का बहुत important role होता है soil formation में, ये आगे पढ़ेंगे हम। ओके, देन ये बायोटिक एलिमेंट्स जो होते हैं ये इस सोइल में, ये पाउडरी फॉर्म जो होता है, सोइल तो नहीं सॉरी, जो पाउडरी फॉर्म होता है डेन्यूडेशन की वजह से जो फॉर्म हुआ होता है पाउडरी फॉर्म, उसके अंदर ये बायोटिक रेमिनेंट्स, रेमिनेंट्स का मतलब होता है रिमेन्स, बायोटिक रिमेन्स, अदर मटेरियल्स, अदर मिनरल्स, ये सभी उसके अंदर मिक्स हो जाते हैं। किसके अंदर मिक्स हो जाते हैं? ये denudation से फॉर्म हुए पाउडरी फॉर्म के अंदर, and then after it gets converted into the soil. See, biotic remnants, humidity and air gets mixed up with it. In other words, the soil is a natural mixture of the minerals and biotic elements which have a capacity to grow and develop the vegetation. ये भी अंडरलाइन कर लेना, ये सब मीनिंग्स है। ओके, डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ द सोइल। इफ यू वांट आई थिंक आई हैव गिवन, ओके, ये 5 डेफिनेशन तो मैंने दी है और मैंने एक और डेफिनेशन अभी बोली 3-4 मिनट पहले ही, तो यू कैन नोट इट डाउन एंड यू कैन राइट इट। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर, द फॉर्मेशन ऑफ द सोइल। ओके, सी अगेन हाउ सोइल इज फॉर्म, तो यहाँ पर पहले डेफिनेशन दी गई, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द क्रस्ट ऑफ द अर्थ which contains the minerals and biotic elements necessary for the growth and development of the vegetation is known as soil. Again, same meaning, underline that. Okay, and let's move further. Although their portion is not same everywhere, thus the soil is the layer or the surface of the matter formed with the mixture of the scattered material or parental rocks and vegetation. Again, the one more definition. The meaning is same only. Okay, just they are using the different kinds of the words. From here, okay, the soil formation process starts. Okay, see how soil is formed. First of all, parental rocks, ये जो parental rocks है मतलब बड़े वाले rocks, okay, it undergoes the process of denudation. Denudation का मतलब होता है breaking of the huge rocks into the small particles. अब ये denudation कैसे होता है? How this denudation occurs? See, this denudation occurs because of the wind, water, air, etc. This all are known as the factors of denudation. इनको factors of denudation कहाँ जाता है? यहाँ पर लिखा हुआ ना factors of denudation. See, factors of denudation means what? Factors of denudation का मतलब होता है wind, air and water. Okay, wind, air and water.
They are known as the factors of the denudation. So because of these factors of the denudation, the parental rocks get converted into the powdery layer. A powdery layer is created. And then after humus or decay of the vegetation is added in this layer. इसका मतलब क्या होता है? See, humus का मतलब होता है कि एक ऐसा कोई एक material, okay, which is formed because of the decaying of the leaves of the different plants. In short, humus का मतलब होता है organic matter. If you want, you can write it down. Humus means the organic matter. Okay, once again I am repeating, parental जो rocks जो होते हैं, okay, वो wind, air, water की वजह से denudate हो जाते हैं, टूट जाते हैं, वो पाउडरी लेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं. उसके बाद उसमें ह्यूमस ऐड होता है. ह्यूमस ऐड होने के बाद उसमें बायोटिक एलिमेंट्स ऐड होते हैं. बायोटिक एलिमेंट्स ऐड होने के बाद उसमें मिनरल्स ऐड होते हैं. एंड एट लास्ट अ लेयर इज फॉर्म्ड एंड दैट लेयर इज नोन एज द सोइल. ओके, ये अभी मैंने जो बोल दिया ना 2-3 मिनट में, 1 मिनट में, इतना टाइम नहीं लगता है. इट टेक्स मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म दी सोइल. ये लेयर, ये जो सोइल है उसको फॉर्म होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं. ओके, ये कोई इजी प्रोसेस नहीं है कि फर्स्ट पेरेंटल रॉक्स, okay, they denudate, powdery layer is created, humus is added, minerals is added, okay, then after at last a thin layer is formed which is known as a soil. Clear हो गया? प्रोसेस क्लियर हो गया? okay, now okay, सी यहाँ पर ये नोट डाउन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. Climate and parental rocks play an important role in the soil formation process. Okay, climate and parental rocks play a very important role in the soil formation process. See why it is so. Example लेते हैं, बहुत ही simple example, कि suppose the parental rocks available in Gujarat and the parental rocks which are available in Jammu and Kashmir both are same. Okay, both the parental rocks available in Gujarat and the parental rocks available in Jammu and Kashmir both are same, by which the soil is formed. But if the climatic conditions are different, okay, which is different in Gujarat, the climatic conditions are different from the climatic conditions of the Jammu and Kashmir. So अगर climate different है तब जो soil form होगी from the same parental rocks, they will have the different characteristics. Are you getting what I am saying? अगर पेरेंटल रॉक्स भी सेम है, कि जो सोइल गुजरात के अंदर जो पेरेंटल रॉक्स है उसमें से बनी है और वही सेम पेरेंटल रॉक्स जम्मू एंड कश्मीर में है, ओके, बट जम्मू एंड कश्मीर की क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है, गुजरात की क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है, तो इनमें से जो रॉक्स बनेंगे वो भी कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे. Okay, so what I am saying is that climate and parental rocks play a very important role in the soil formation. यहाँ पर मैंने climate पे स्टार इसलिए किया हुआ है because even if the parental rocks are same and the climatic conditions are different, then the characteristics of the soil will be different. Okay. So now just have a quick look at the paragraph. Generally, the part of the surface of the earth wherein the vegetation grows is known as the soil. The soil is a thin layer of the elements on the surface of the earth. The definitions which I have already explained. Minerals, humidity, humus, air are mixed with it. The parental rocks lie below the soil. Soil is formed because of the material available through denudation. These all different kinds of the definition I have already explained. So let us move towards the soil formation process. The upper layer of the earth, of the crust of the earth, is known as soil. Okay, although there is a proportion the same everywhere, the soil is the layer or the surface of the matter due to the mixture of the scattered parental rocks and the other vegetation. Factors of the denudation prepare a very thin layer of the denudation of the rocks. The humus formed due to the disintegration or decay of the vegetation is added to this. ये मैंने अभी समझाया कैसे. पहले जो सोइल होती है, सॉरी, पेरेंटल रॉक्स होते हैं, वो बिकॉज ऑफ द डेन्यूडेशन दे गेट कन्वर्टेड इनटू द पाउडरी फॉर्म. पाउडरी फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद उसमें बायोटिक एलिमेंट्स ऐड होते हैं, ह्यूमस ऐड होता है, मिनरल्स ऐड होते हैं और उसके बाद एक लेयर बन जाती है और उस लेयर को क्या कहते हैं? सोइल कहते हैं. सी द climatic impact in the duration of the soil formation is so important and widespread that formed of the different types of the rocks in that region over a long period of time is same. ये लाइन समझना है जरा.
Underline, climatic impact in the duration of soil formation is so important and widespread that the soil formed of the different types of the rocks in a region over a long period of time is same. इसका मतलब क्या है कि पेरेंटल रॉक्स डिफरेंट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रॉक्स, लेकिन क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, सेम है। तो रॉक्स की जो सोइल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वो भी क्या होगी, सेम होगी। ओके, पेरेंटल रॉक्स अलग अलग है लेकिन क्लाइमेटिक कंडीशन उनको सेम मिली है, तो सोइल की कैरेक्टरिस्टिक्स भी कैसी होगी, सेम होगी। अगर पेरेंटल रॉक सेम है और सोइल की क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग है तो सोइल की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होगी, डिफरेंट होगी। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? इफ पेरेंटल रॉक्स आर सेम but the climatic conditions are different, then the characteristics of soil also will be different. So the soil formed out of the same parental rocks under the different climatic influence is different. ये बहुत important है, put a star on that. Okay. Now we'll study about the classification of the soil, one of the most important topic of our chapter. Soils are classified on the basis of their color, climate, parental rocks, structure and humus. Okay, these are the few different things on the basis of which soils are classified, on the basis of color, climate, parental rocks, structure and humus. और इनका classification करता कौन है? Okay, who is classifying these different types of the soil? So the answer is ICAR, Indian Council of Agriculture Research. ये एक autonomous body है which was established in 1929. It is situated in New Delhi. ये कौन, ये मतलब ये क्या काम करती है? तो it works for the development and the research work in the field of the agriculture. From the name itself you can get a clear idea. Indian Council of the Agriculture Research. See this ICAR, don't confuse with it ICMR जो अभी हाल ही में बहुत चर्चा में, Indian Council of Medical Research. Okay, it's ICAR, Indian Council of Agriculture Research. See, it has divided the soil into 8 different types. Already in 9th standard you have learned about 6 different types of the soil. यहाँ पर 2 और ऐड की हुई है। ओके, फॉरेस्ट सॉइल, मार्शी एंड पिटी सॉइल, ये 2 नहीं है ऐड की हुई, अदरवाइज the 6 different types of the soil you have already studied in the 9th standard. So we'll just learn the elaborated version here. So first of all start with the alluvial soil. Just have a quick look. Alluvial soil, red soil, black soil, laterite soil, desert soil, mountain soil, forest soil, marshy and peaty soil. So we'll start with the alluvial soil. But before that one more thing. ये जो पूरी जो soil है ये, उसमें से map का एक question आता है. Okay, there are chances that the map question can be asked from these different types of the soil. It's very easy. यहाँ पर ये क्या बोलेंगे, इंडिकेट वन रीजन ऑफ एलुवियल सोइल, आइदर इंडिकेट वन रीजन ऑफ रेड सोइल, वन रीजन ऑफ ब्लैक सोइल, लेटरेट सोइल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, सो आपको क्या करना है, एलुवियल सोइल जितने जितने स्टेट्स में फाउंड होती है उसमें से एक मेजर स्टेट आपको याद रखना है। सिमिलरली इट अप्लाइज टू द रेड सोइल ऑल्सो, ब्लैक सोइल, लेटरेट सोइल, डेजर्ट सोइल, ये मैं लिखवा दूंगा आपको। ओके, ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको लिखवाऊंगा एक एक स्टेट्स के नाम, एलुवियल सोइल कहां पर फाउंड होती है। ऐसे तो कितने सारे स्टेट्स है, बट यू हैव टू रिमेंबर ओनली वन स्टेट फॉर इंडिकेटिंग इट इनटू द मैप। देन आफ्टर रेड सोइल, ब्लैक सोइल, लेटरेट सोइल, और कैसे इंडिकेट करना है दैट आल्सो आई विल टीच यू। देन आफ्टर first of all we'll start with the alluvial soil. Okay, see this type of the soil is spread over the 43% of the total land area of India. Most important area, underline, put a star over there. 43% of the total land area of India, मतलब land area जितना है इंडिया का टोटल कितना है नहीं पता है, तो पता है already you have studied in the 9th standard, no? Total land area of India, अच्छा 3.287 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, 3.287 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, उतना है लैंड एरिया इंडिया का। सी दिस सोइल इज फाउंड इन द नॉर्दर्न प्लेन फ्रॉम द ब्रह्मपुत्र वैली इन द ईस्ट अप टू सतलुज इन द वेस्ट। और हाँ, एक और बात, सी ये पूरी जो 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोइल है उसमें एक सेम पैटर्न फॉलो होगी। यहाँ पर मैंने एग्जांपल में दिया, यहाँ पर ड्रॉ करके आपको ऐसा एक चार्ट बनाना है आपको फॉर ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द
soil, you have to make this chart. See, first of all it starts with the alluvial soil. तो यहाँ पर आपको SR number 1 name alluvial soil, then after you have to put the column of the state, उसमें states के नाम लिख देना है, पंजाब, यूपी, आसाम, etc. then minerals found, पोटैश, लाइमस्टोन एक्सेट्रा. मिनरल्स नॉट फाउंड, नहीं फाउंड होते वो भी दिया है इसमें, नाइट्रोजन एंड ह्यूमस. देन क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन दी एलुवियल सॉइल, तो व्हीट, पैडी, ज्यूट एक्सेट्रा. तो ऐसा ही टेबल आपको पूरी डिफरेंट सॉइल्स के लिए बनाना है. यहाँ पर सेकंड में आप नंबर 2 लिखकर यहाँ पर लिखो रेड सॉइल, ओके. उसके बाद ब्लैक सॉइल, लेटरेट सॉइल, डेजर्ट सॉइल, माउंटेन सॉइल, marshy and peaty soil, forest soil, etc. Same thing, name, then after states, minerals found, not found and crops. और say for example forest soil में यहाँ पर minerals found या not found नहीं दिए तो you can just put a dash. Crops भी नहीं दिए तो just put a dash over there, okay. Blank, no need to write. अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, नहीं मिल रहे मिनरल्स फाउंड या नॉट फाउंड कुछ भी, तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, ओके. वहां पर मैं आपको सोल्व करा दूंगा. अदरवाइज ये पूरा का पूरा बनाने में थोड़ा टाइम जाएगा, इसलिए मैंने सिर्फ आपको एक स्पेसिमेन बनाकर दे दिया यहाँ पर, ओके. लेट्स मूव फर्दर. तो सभी में ऐसा ही है, इसलिए नेम है, उसके बाद स्टेट्स है, उसके बाद मिनरल्स फाउंड है, नॉट फाउंड है और क्रॉप्स है. तो सी द टाइप्स ऑफ द सोइल स्प्रेड ओवर 43% ऑफ द लैंड एरिया. देन कहां पर फाउंड होती है, तो स्टेट्स तो पंजाब, यूपी, आसाम मैंने बोल दिया. उसके बाद थोड़ा बहुत यहाँ पर डिटेल वर्जन में दिया गया, ब्रह्मपुत्रा वैली नियर आसाम, okay, in the east. Then Satluj in the west, Satluj near Punjab in the west, okay. Then in the delta regions of the Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri. अच्छा, ये डेल्टा रीजन्स में क्यों फाउंड होती है एलुवियल सॉइल, उसका भी रीजन है, मैं बताता हूँ आपको. उसका नेम ही है एलुवियल सॉइल. It is formed because of the deposition of the alluvium. Alluvium का मतलब क्या होता है? Just note it down in your rough book. Alluvium means it's a mixture of sand, stones, mud, gravel, etc. Okay, it's a mixture. ये mixture है sand, stones, gravels का. ये जो पानी होता है ना, river bed near the banks of the river, वो जो पानी अपने साथ जब मतलब ये tides and ebbs आती रहती है rivers में, okay, lakes में, तो वो पानी अपने साथ mud's, okay, gravel, sands, ये सभी लेकर आता रहता है. तो ये इसका एक मिक्सचर बन जाता है नियर द बैंक्स ऑफ द रिवर. डेल्टा रीजन का तो मतलब पता होगा आपको, ट्रायंगुलर रीजन फॉर्म बाय द रिवर्स एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. अगर ना पता हो तो लिख लेना, ट्रायंगुलर रीजन फॉर्म बाय द रिवर्स एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. तो ये सोइल डेल्टा रीजन के पास इसलिए फाउंड होती है बिकॉज जो पानी होता है वो एलुवियम लेकर आता है अपने साथ, okay, and this alluvium starts depositing near the river banks, near the river bed, और ये एक लेयर बन जाती है, और after millions and millions of years it gets converted into the soil. ये पूरी जो लेयर होती है वो soil में कन्वर्ट हो जाती है. So alluvial soil इसका नाम ही इसलिए पड़ा है because it is formed because of the alluvium, okay. See, and that's why it is found near the delta regions of the Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri. The formation of alluvial soil is due to the alluvium deposition by the rivers. Then minerals found, potash, phosphoric acid, limestone, etc. And minerals not found, the less proportion of the nitrogen and humus. तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है मिनरल्स नॉट फाउंड में नाइट्रोजन एंड ह्यूमस. Then if pulses are grown in this soil, the nitrogen content can be stabilized. इसका क्या मतलब है? बिकॉज अगर आप पल्सेस ग्रो करोगे एलुवियल सॉइल में तो नाइट्रोजन कंटेंट इसमें आप ऐड कर सकते हो. नाइट्रोजन कंटेंट इसमें होता नहीं है एलुवियल सॉइल में, बट यू कैन ऐड द नाइट्रोजन कंटेंट इफ यू आर ग्रोइंग द पल्सेस. उसका रीजन ये है बिकॉज पल्सेस फिक्स द नाइट्रोजन थ्रू द नोड्यूल्स फॉर्म्ड इन द रूट्स. ये साइंस का एक पार्ट है. ये सेंटेंस के लिए भी मैं 10% सैलरी काटने वाला हूँ देवेंद्र सर की, ओके, मुझे दे देनी है. और ये तो बराबर ही है ना, आधा साइंस का लेसन तो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर. अच्छा कोई बात. The pulses are grown in this soil,
okay, the nitrogen content can be stabilized, sorry. उसका रीजन है बिकॉज पल्सेस के जो नोड्यूल्स होते हैं, नोड्यूल्स वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके रखते हैं, एंड दैट्स व्हाई नाइट्रोजन कंटेंट कैन बी एडेड बाय ग्रोइंग द पल्सेस इन द एलुवियल सॉइल. देन आफ्टर कैसे कैसे क्रॉप्स ग्रो होते हैं, तो wheat, paddy, jute, maize, oilseeds, cotton, etc. is grown in this soil. अब यहाँ पर स्टेट्स तो लिखा नहीं है सर, तो कैसे, तो आप देख सकते हो ना स्टेट्स, तो नियर पंजाब, ओके, देन आफ्टर सर्टेन पार्ट्स ऑफ गुजरात ऑल्सो एलुवियल सोइल, ओके, देन आफ्टर उत्तर प्रदेश है, देन आफ्टर हियर आसाम भी है, ओके, तो लिख सकते हो पंजाब, यूपी, आसाम एक्सेट्रा. ओके, so let's move towards the red soil. Red soil again, it occupies 19% of the total land area of the India. 19%, ये अंडरलाइन कर लेना, important है. 43% alluvial soil, 19% red soil. Then it is spread from Tamil Nadu in the south, peninsular India. Okay, South India is peninsular because it has the water on its three sides. Then ये इंपॉर्टेंट है समझना, साउथ में तमिलनाडु, एस तो उतना नहीं है. It spread from Tamil Nadu in the south, then Bundelkhand in the north, Bundelkhand near the UP, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh के side में, north में, then Rajmahal Hills in the east near Jharkhand, then Kutch in the west. ये अंडरलाइन कर लेना, नॉर्थ में कहाँ तक है ये सोइल, ईस्ट में कहाँ तक है, वेस्ट में कहाँ तक है, ओके, यू जस्ट अंडरलाइन दैट. वेस्ट में कच्छ में, ईस्ट में राजमहल हिल्स, नॉर्थ में बुंदेलखंड एंड साउथ में तमिलनाडु तक ये सोइल फैली हुई है. ओके, रेड सोइल, एंड सम पार्ट्स ऑफ द सोइल कैन बी आल्सो बी फाउंड इन द राजस्थान, ये जरूरी नहीं है. सो यहाँ पर आप नंबर 2 लिखो रेड सोइल. स्टेट्स, तो स्टेट्स में आप लिख सकते हो क्या, तमिलनाडु लिख सकते हो, कच्छ है तो गुजरात भी लिख सकते हो, फिर राजमहल हिल्स तो मैंने बोला झारखंड, फिर उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पर ये सभी लिख सकते हो आप. देन मिनरल्स फाउंड इन द सोइल, तो कौन कौन से मिनरल्स है चलो देख लेते हैं. The soil is red in color because of the presence of the ferric oxide. ये mineral, okay, कोई बात नहीं, लेकिन ये तो just information. Ferric oxide Fe2O3, okay, if I am not mistaken, then ये one of the 3 main oxides of the iron है, ferric oxide, okay, and it gives reddish color to the substances. So because of the presence of the ferric oxide, the soil is red in color and it becomes yellow while going down. Then minerals found, lime, gravel, carbonate are not found in this soil. तो यहाँ पर minerals not found में आप लिख सकते हो lime, gravel and carbonate. Okay, there is a deficiency of the lime, magnesium, phosphate, ये दो बार आ गया है. Lime, magnesium, phosphate, nitrogen and potash in this soil. See, यहाँ पर 2 बार दिया गया, lime, gravel, carbonate not found, again deficiency of lime, magnesium, phosphate, carbon, potash etc. तो ये दोनों बार not found नहीं है. ओके, ये निकाल दो आप. Minerals found in the soil, minerals not found in the soil. Then after crops grown, तो crops like millet, cotton, wheat, जुआर, लिनसीड का मतलब अड़सी, उसको गुजराती में ऐसा बोलते, ग्राउंडनट, पोटैटो एक्सेट्रा आर ग्रोन इन दिस soil. So it's very easy to understand if you just by heart this specimen. Okay, first of all you have to go through with the name, here red soil, then after states में तमिलनाडु, then after गुजरात, झारखंड, उत्तर प्रदेश, minerals not found and minerals found. तो minerals found में lime, gravel, carbonate, not found में magnesium, phosphate, nitrogen, potash etc. Then crop millet, cotton, wheat, jowar, linseed etc. Okay, then let us move. Black soil. Okay, black or regular soil covers up the 15% of the total land area of India. So underline that, 15% of the total land area of the India. It covers 15%. Alluvial soil 43%, red soil 19% and black soil 15%. This soil was formed due to the spreading of the Deccan lava. Deccan lava, lava, because lava plays a very important role in the formation of the black soil, and that's why it is very much fertile also. This soil is formed because of the Deccan lava, और ये ज़्यादा fertile इसलिए होती है. Black soil is very fertile.
Okay, such soil is found in the entire Maharashtra, western Madhya Pradesh, Andhra Pradesh and certain part of the Karnataka. तो यहाँ पर states में आप क्या लिखेंगे? महाराष्ट्र, then after western मध्य प्रदेश, सिर्फ मध्य प्रदेश लिखो कि कोई बात नहीं, अगर ये वेस्टर्न मध्य प्रदेश याद नहीं रहता तो निकाल दो। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश याद रखो, कर्नाटका, देन गुजरात में भरूच, नर्मदा, वडोदरा, गुजरात में ही ज्यादा फाउंड होती हो ब्लैक सॉइल। Then near Tapi and Dang district. Lava rocks and climate play a very important role in the formation of this soil. ये मैंने बोला था lava. Okay, lava plays a very important role in the formation of this soil and that's why this soil is very fertile. Then minerals कौन कौन से found होते हैं और minerals कौन कौन से नहीं found होते हैं? तो just have a quick look. More proportion of iron, lime, calcium, potassium, aluminium and magnesium are found in this soil. तो यहाँ पर अंडरलाइन कर लेंगे हम मिनरल्स विच आर फाउंड इन द सोइल। तो लिख लो यहाँ पर ऐसे टेबल में आप लिख सकते हो क्या? आयरन, लाइमस्टोन, देन आफ्टर कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। दिस आर द मिनरल्स विच आर फाउंड इन द ब्लैक सोइल। सी मिनरल्स नॉट फाउंड नहीं दिए तो जस्ट पुट ए dash. This soil is also having capacity of retaining more moisture whenever the moisture dries up and develop the fissures. Crops like fissures, yes, fissures का मतलब cracks होता है। Okay, मैं समझाऊंगा, अभी just read कर रहा हूँ। Crops like cotton, linseed, mustard, groundnut, tobacco, etc. are grown in this soil. तो यहाँ पर crops में आप लिख सकते हो cotton, linseed, mustard, groundnut, tobacco, etc. are grown in this type of the soil. This type मतलब black soil. As it is more suitable, this soil is also known as black cotton soil. ये most important है। Why it is known as black cotton soil? इससे पहले ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक समझ लो तो आंसर ज्यादा समझ में आएगा। See, this soil has a capacity of retaining more moisture. Okay, black soil has a capacity of retaining more moisture. अगर आप black soil में पानी डाल दो तो वो पूरा muddy हो जाएगा। Okay, mud like. तो वो why? Because it has a characteristics of retaining more moisture. अगर once it gets dried up, okay, एक बार आपने पानी डाल दिया तो वो पूरा मडी टाइप हो जाता है। उसके बाद once it gets dried up, it develop fissures का मतलब होता है cracks। ये देख सकते हो आप, सी cracks, वो चॉकलेट जैसा लगता है, कई बार खाने का मन भी हो जाता है, खा मत लेना चॉकलेट समझकर। सी it develop the fissures means cracks. ओके, गर्ल्स को ज्यादा पसंद होता है ना ये चॉकलेट, तो थोड़ा ध्यान रखना। ओके ओके, जोक्स अपार्ट। सी कैरेक्टरिस्टिक्स समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आंसर आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा। व्हाई ब्लैक सॉइल इज नोन एज ब्लैक सॉइल इज नोन एज द कॉटन सॉइल। सी कैरेक्टरिस्टिक्स समझो। दिस सॉइल हैज अ कैपेसिटी ऑफ रिटेनिंग मोर मॉइस्चर, कैपेसिटी ऑफ रिटेनिंग मोर मॉइस्चर एंड बिकॉज ऑफ दैट। तो ये सर सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक से कैसे समझ में आएगा? सी समझाता हूँ। कॉटन जो होता है उसको ज्यादा पानी की जरूरत होती है। ओके, तो कॉटन कैसी सोइल में ग्रो होगा? जहां पर ज्यादा पानी है, ज्यादा मॉइस्चर होगा। ओके, एंड ब्लैक सॉइल हैज दैट कैपेसिटी टू रिटेन द मॉइस्चर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ब्लैक सॉइल के अंदर वो कैपेसिटी होती है कि वो मॉइस्चर को रिटेन करके रख सके ज्यादा समय के लिए। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन the black soil is more suitable for growing the cotton soil, and that's why black soil is also known as the cotton soil. It can also be asked in a short answer as well as from the MCQ, fill in the blanks, etc. तो ये note down कर लेना। Okay, black soil, the other name of black soil is रेगुर soil और cotton soil। तो short answer में भी पूछ सकते हैं why black soil is known as cotton soil। ओके, तो उसका रीजन क्या है? बिकॉज इट इज मोर सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द कॉटन क्रॉप। और व्हाई इट इज मोर सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द कॉटन क्रॉप? तो उसका एक रीजन है बिकॉज इट हैज द कैपेसिटी ऑफ रिटेनिंग द मोर मॉइस्चर। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया? आज कितने टॉपिक्स कवर किए? प्लानिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेज, उसमें कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं। ओके, देन द मीनिंग ऑफ द सोइल, देन सोइल फॉर्मेशन क्या होता है, कैसे सोइल बनती है, देन टाइप्स ऑफ द सोइल। टाइप्स ऑफ सोइल में कितने हैं? तो के 3 टॉपिक कवर किए, एलुवियल सोइल, रेड सोइल एंड ब्लैक सोइल। 8 में से 3 निकाल दो तो 5 और बचते हैं, बराबर ना? ओह, मेरा मैथ्स कितना पावरफुल है, वाह। सी 5 different types of the soils are remaining, and then after 2 more topics is there, soil conservation and soil erosion. So that we will cover in the next lecture. Hope you have enjoyed it, और कुछ समझ में ना आया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना।
मैं आंसर दे दूंगा. ओके, hear you soon, hear me soon, not hear you. Okay,